Hello बच्चों, let's read this question. The de Broglie wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is. So students, इस question में हमसे पूछा जा रहा है that what is the de Broglie wavelength for a particle which is moving with mass m and velocity v. So students, पहले समझते हैं what actually happened. So in the photoelectric effect, when a light sufficient energy is incident on metal surface. Let's say we are observing this electron. अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा. सो अगर इस फोटोन की एनर्जी सफिशियंट हो ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके, देन अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस फोटो इलेक्ट्रॉन से इस सरफेस से बाहर आ जाएगा. So students, photoelectric effect established dual nature of light. That is, light consists of particle and wave nature both. आप यहाँ देख सकते हो that there is an interaction or collision of photon with this electron. So यहाँ से ये fact establish हुआ that light is particle nature. Initially light को wave nature की तरह consider करते थे, but then ये electron जो emitted हुआ इस case में, de Broglie said, then de Broglie said that the matter can also have dual nature. और उन्होंने सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला that this electron can also have dual nature, that is for particle nature, and it can have some waves also. So according to him, the wavelength he given, please note the key concept, that the de Broglie wavelength associated with a moving particle is given by lambda equals to h upon p, where h represents Planck's constant, h is Planck's constant, p represents momentum of particle, which is known as mass into velocity. So यहाँ से lambda की वैल्यू आएगी h upon, instead of p we will write mv. So this is the de Broglie wavelength of a particle moving with some velocity v. मैटर के ड्यूअल नेचर को भी स्टैब्लिश करा था. इज मैचिंग विद ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स. थैंक यू.